which we already started last time. Okay, so I hope you can see the board. Yes, so let us consider the next numerical. I think we have already seen some numericals last time. 5 to 6 MCQs already solved. So let us see the next. Yes, let us try this 8th question here. Okay, let us read this question carefully. An observer can see through a pinhole at the top end of the thin rod of height h. Okay, ये जो है यहाँ पे एक रॉड है और इस थिन होल में से ये पर्सन देख सकता है, ठीक है. And this pinhole okay, the observer can see through the pinhole the top end of a thin rod of height h. मतलब इस रॉड का height h दिया हुआ है, ओके, और इस रॉड का एंड पॉइंट जो है वो ये पर्सन यहाँ से देख सकता है इस होल में से, ये दिया हुआ है. ओके, तो द बिकर हाइट इज 3h. ओके, तो मतलब इस पूरे बिकर का जो हाइट दिया हुआ है वो यहाँ पे 3h दिया हुआ है. चलो ठीक है. देन एंड रेडियस इज h. ओके, तो इस बिकर का रेडियस जो है वो 2h दिया हुआ है, जो उसका डायमीटर जो है तो वो 2h बन जाएगा. तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो h है, ये भी h है, तो करके वो टोटल डायमीटर उसका 2h बन जाएगा. चलो ठीक है. Then when the beaker is filled with the liquid up to a height 2h. ओके, मतलब लिक्विड जब हम यहाँ पे 2h इतने हाइट तक भरते हैं तो he can see the lower end of the water. Okay, that means in this case the person can see the lower end of the water. That means the ray of light will start from the lower end of the water and just bend here in such a way that they will just pass through the eyes of the observer here. Okay, ऐसा दिया हुआ है. Okay, then what is the refractive index of the liquid here? We want to find out the refractive index of this liquid. Yes. So see, there are two situations given here. First is this, whatever we can see here. यहाँ पे जो हमको दिख रहा है वही actually एक situation है जिसको हम first situation बोल सकते हैं, ठीक है, before adding the water in this beaker. But the second situation here is going to be the situation after adding the water in this beaker. So once we add the water in this beaker, the situation is somewhat different. You can just draw the diagram for that and just understand that after filling the water in this beaker here, the water will be at a height 2h here, which is between h and 3h. So here the water level will be at this point here. Okay, तो यहाँ तक water level आएगा. Yes, and in this case the ray of light will just starting from the lower end of the rod. यहाँ से जो रे स्टार्ट होंगे वो यहाँ पे जाके इस तरह से बेंड होंगे और बेंड होने के बाद इस तरह से इस ऑब्जर्वर के आईज में से निकल जाएंगे. That means, and that's why the person or observer can see the lower end of the beaker here. So in this case, if we just try to draw the normal here, तो यहाँ पे अगर हमने normal draw किया, ये समझो हमारा normal बन गया. ठीक है, ये normal है.
Okay, so see here, if we just zoom out slightly at this point here, यहाँ पे अगर हम थोड़ा zoom करके देखेंगे ठीक से ना, तो हमको पता चलेगा कि ये डायग्राम को ठीक से ऑब्जर्व करो। यहाँ पे क्या हमको दिखाई दे रहा है, देखो सबसे पहली बात कि यहाँ पे हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमको साइन आई और साइन आर दोनों निकालने पड़ेंगे। अब यहाँ पे इसमें एक बात समझो कि आई कितना है और आर कितना है। सो अगर हम ये समझेंगे आई कितना है, तो आई इज गोइंग टू बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस which is the angle made by the incident ray with the normal. So here we can just say that the angle of incidence is going to be this here. ये यहाँ पे एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस रहने वाला है, जिसको हम बोल सकते हैं आई। ओके, एंड R is going to be the angle of refraction, which is this one here. ये यहाँ पे angle of refraction रहने वाला है, जिसको हम R से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, yes. So and we want to find out the ratio of sin R to sin I, because the body is the ray is traveling from denser medium to rarer medium here. तो ये नीचे नीचे वाला जो है लिक्विड जो है वो डेंसर मीडियम है और ये वाला रेयर मीडियम है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, just have the formula for refractive index mu, which is going to be equal to sin, वैसे तो sin I upon sin R है, लेकिन यहाँ पे हमको R को I मानना पड़ेगा। तो we can find out the refractive index by just dividing this sin R upon sin I here. Okay, yes. So the next job is to find out sin R and sin I here. See, if we just extend this line up to this base, then we can understand that this triangle, in this triangle, ये जो triangle हमको दिख रहा है, ये वाला triangle देख रहे हो, इस triangle के अंदर इसका जो opposite side है वो तो हम h देख रहे हैं, और उसका जो hypotenuse है तो वो हमको भले पता नहीं, लेकिन ये adjacent तो पता है कि नहीं, वो 2h है, क्योंकि हमने एक्चुअली वाटर जो है, ये इसके अंदर वाटर जो हमने भरा है वो 2h इतने लेवल तक वाटर भरा है, ये ऑलरेडी दे रखा है। So that's why we can just understand that this distance here, यहाँ से यहाँ तक का जो distance है, that is actually going to be 2h here. तो इसको हम 2h लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी 2h होगा जरूर, और अगर ये 2h है और ये अगर h है, तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखते हैं ठीक से ना, ये वाला ट्रायंगल, तो वी कैन जस्ट calculate and use the Pythagoras theorem also in this triangle. See here, if suppose we call it as call this point as A and this point as B and this point is called as C. So in this ABC, we can just get that AB square is going to be equal to BC square plus AC square. You can just understand why. It's Pythagoras theorem. So AB square finally is actually going to be BC square, where BC is nothing but H simply. So it will be H square plus AC square, where AC is going to be 2H actually. So here it will be 2H and we can just square it. So we can just get this AB square to be simply equal to H square plus 4H square, which actually happens to be 5H square, right? And in this case, we can just get this AB square to be simply equal to 5H square. And then if we just take the square root on both sides, then we can get this as AB is equal to root 5 into H. Yes, AB is going to be root 5 times of H.
Okay. So AB is found out. So in this triangle, once again, you can just find out this sine I here. Okay, so sine I हम निकाल सकते हैं आराम से. What is this sine I here? So you can just get that sine I is going to be the opposite side, that is BC, upon hypotenuse, that is AB here. Okay, तो BC तो हमको पता है ऑलरेडी H है, राइट? और AB जो है वो अभी हमने फाइंड किया, it is root 5 times of H. So if we just divide this here, then we can get this root 5 times of H, and then we can just get that HH cancel in here, and what we are left with is sin I is equal to 1 upon root 5. Okay, 1 upon root 5. Yes, so this is the value of sin I we have got here. If we just talk about R here, अब देखो R हमको यहाँ sin R जो है वो हम इस डायग्राम्स में यहाँ पे इसके अंदर कोई ट्रायंगल तो है नहीं इधर, but we can just see that this angle, because see here this line, ये जो लाइन है वो एक नॉर्मल जो है वो तो सीधा वर्टिकली नीचे नीचे जा रहा है. ओके, और एट द सेम टाइम ये जो रेड कलर का जो लाइन है वो सीधा एक्सटेंड अगर किया हमने आगे तो वो इस तरफ निकल जाएगा और यहाँ पे जाके मिलेगा, राइट? तो इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का प्रिंसिपल अगर यूज करेंगे तो इसमें से हमको पता चल रहा है कि एक्चुअली ये जो एंगल हमको दिख रहा है ट्रायंगल के अंदर, ये वाला जो एंगल है कि नहीं, ये एंगल एक्चुअली आर है, करेक्ट? So this angle is R here. So in order to find out this angle R here, we can just drop a perpendicular from this point. तो यहाँ से एक perpendicular drop करेंगे इधर यहाँ पे, करेक्ट है? Okay, so we can get a triangle and we can just get these 2 points also. तो इन 2 points को भी हम नाम देके रख देंगे. इसको चाहिए तो बोल दो D. Okay, we can call it as D, and this point will be called as E here. Okay, so in the triangle ADE, once again we can just make use of Pythagoras theorem. In the triangle ADE, what can we see here is, अच्छा एक बात तो क्लियर है कि ये 2h मतलब ये हाइट है, ये पूरा हाइट 2h है, और उसमें से ये जो h है तो वो अगर हटा दो तो जो बचता है तो वो ये डिस्टेंस रहेगा जो कि h के बराबर रहेगा. That means we can just understand that this distance AE here is going to be h only. तो ये तो हम समझ सकते हैं, h is this here, and if suppose we consider this distance here, then that is already found out to be h here. So that we can just get that in this triangle ADE, the Pythagoras theorem gives AD square. Okay, AD square must be actually equal to AE square plus DE square, correct? Yes, and then we can just understand that AD square is to be found out, right? So AD square can be written to be AE square, where AE is nothing but h. So we can just understand that this will be h square plus h square once again. So that means it is going to be 2h square. So if we have this AD square is equal to 2e square. तो AD square equal to 2h square है, तो इसका मतलब फिर AD कितना हुआ है? तो AD will actually be root 2 times of h. Okay, and then we'll be able to find out this sin R here. तो sin R अगर हमको निकालना है तो sin R can be written to be simply equal to, अभी इस ट्रायंगल के अंदर देखो ठीक से, फिर से ये जो ट्रायंगल हमको मिल रहा है ADE, इस ट्रायंगल के अंदर अगर देखते हो ठीक से तो sin R का फॉर्मूला क्या मिलेगा हमको? sin R can be written to be simply equal to opposite side, which is DE here,
upon hypotenuse, which is AD here. So it will be DE upon AD here. Okay, so DE is nothing but H only, and AD is just found out to be equal to root 2H here. And if we just put this root 2H here in the denominator, then H will get cancelled, and we'll be left with the value of sine R to be simply equal to 1 upon root 2, correct here? And now then we can just be able to find out the value of refractive index mu, which is actually going to be the ratio of sine R to sine I. And we can just get this sine R to be replaced by 1 upon root 2. And sine I is going to be replaced by this 1 upon root 5 here. So this is 1 upon root 5. And now if we just simplify this, so mu can be written to be equal to ये reciprocals है ना, ये 1 upon root 2 upon 1 upon root 5. So इसका जो reciprocal है, मतलब उसका जो value है simplify करने के बाद क्या बनेगा? Root can be combined, and this 5 by 2 will be there in the inside, in the interior, in the square root sign. So refractive index of that liquid will be actually root 5 by 2 in this way. Okay, which is there actually in the root 5 by 2, which is there already in the option B here. Okay, so B will be the correct option here. Yes, let us move to the next question. A ray of light is incident at glass water interface at an angle I. It emerges finally parallel to the surface of water. Then the value of mu G would be. Okay, so this is the question. Just read it carefully. A ray of light is incident at glass water interface at an angle I. Okay, मतलब ये जो एंगल है वो I दिया हुआ है, उस एंगल पे वो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है. ठीक है, yes, it emerges finally parallel to the surface of water. Okay, that means here at the surface of water, it just emerges parallelly. That means it passes grazing the surface, tangential to the surface here. That means it should be incident at an angle of critical angle here in the surface of water, right? And then we have to find out the value of mu G, that is the refractive index of glass here, where the refractive index of water is already given. Okay, so water ka refractive index already diya hua hai, 4/3. We want to find out the refractive index of glass. Yes, so whatever it may be, see, if suppose the refractive index of glass is mu G here, then we can just get that Snell's law applied on this first interface here will give us, okay, I के फॉर्म में हमको इसको एक्सप्रेस करना है, राइट? सो सी, सबसे पहले हम अगर स्नेल्स लॉ यूज करेंगे इस इंटरफेस पे, तो देखो क्या होगा. Yes, so try to apply the Snell's law on this interface first. So it will give us अब देखो यहाँ पे mu G, स्नेल्स लॉ का एक फॉर्मूला है, तुमको पता होगा. जिस मीडियम के अंदर जो एंगल होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस एंगल का प्रोडक्ट जो है, साइन ऑफ एंगल का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है. सो यू कैन जस्ट यूज इट एज म्यू जी इनटू साइन आई मस्ट बी इक्वल टू म्यू डब्ल्यू इनटू साइन आर. ओके, या तो ऐसा यूज कर सकते हो, या तो फिर हमारा नॉर्मल साइन स्नेल्स लॉ जो है वो भी यूज कर सकते हो आराम से, जो कहता है सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अगर सपोज हम यहाँ पे इसको I बोल रहे हैं और इसको R बोल रहे हैं, तो the ray of light is traveling from glass to water, so we can just define the refractive index of water with respect to glass, which will actually be equal to the sine of I upon sine of
r, and g mu w can be written to be simply mu w upon mu g, which must be equal to sin I upon sin r, which on cross multiplication gives again the same thing which we have got it here. तो यहाँ पे जो हमको मिला है वही हमको यहाँ पे भी मिलने वाला है. चलो ठीक है. So once we get cross multiplication, we can get here. Now we can just understand that sin r, actually here sin r, if you just apply the formula for critical angle here at this point, then we can just understand that sin r must be the critical angle, and we already know that this sine of critical angle is always equal to 1 upon refractive index of that denser medium with respect to the medium. So we can just understand that this mu will be replaced here, that is mu w here. तो sin r equal to 1 upon mu w, ये अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो आपको मिलेगा sin r is equal to 1 upon 4/3, and hence we can just get that sin r is actually going to be equal to 3/4, right? 3/4. If you just put this value of sin r here in this formula, then we can be able to get that mu g into sin I must be equal to mu w into sin r, but sin r is already obtained to be 3/4, and also that is mu w is already 4/3. So here we just replace this 4/3 and 3/4. So 4/3 and 3/4 just get cancelled because they are just reciprocals of each other, and hence we can just get that mu g into sin I is going to be 4/3 into 3/4. मतलब ये 4 cancel, 3 cancel, we are left with 1. And since mu g into sin I is going to be 1, means value of mu g must actually be equal to 1 upon sin I. Okay, which is already there in option B here. It should be correct. Okay, so B must be the correct option here. Yes, let us go to the next question. Question number 10, we can say. Yes, a prism, glass prism of refractive index 1.5 is dipped in water whose refractive index is 4/3, as shown in this figure. The ray of light is incident normally on the surface AB. Okay, just like this, it is shown in this figure. AB surface पे वो incident होता है. It reaches the surface BC. ये BC surface पे वो incident होता है, and after totally reflected. Okay, तो यहाँ से total reflection सफर करके वो BC पे incident होता है. Okay, we want to find out the condition for which it will just get totally reflected at BC. So see here. ये थीटा एंगल पे वो इंसिडेंट हो रहा है. See here, if you just analyze this diagram, let us try to draw the normal at this point here. तो इस पॉइंट पे अगर हम सपोज नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस जूम सम स्लाइटली, एंड देन विल ड्रॉ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट हियर. तो यहाँ पे एक नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे इधर. ओके, ये बन गया नॉर्मल. Okay, so this is the normal here. So since this angle is theta,
we can just understand that this angle is going to be 90 minus theta. Okay, and because of that, the angle of incidence, which is the angle made by this ray with the normal, incident ray with the normal, must also be the same, that is theta here. Can you say like this? ये थीटा क्यों हो, समझा ठीक से? क्योंकि देखो ये एंगल थीटा है यहाँ पे, तो ये इसकी वजह से अगर इसको हमने x बोल दिया तो x प्लस थीटा मस्ट बी 90 बिकॉज दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. ये जो है ये एक्चुअली एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसकी वजह से ये x प्लस थीटा इक्वल टू 90 हो गया. बट दिस टोटल ये नॉर्मल है ना यहाँ पे, तो नॉर्मल होने की वजह से ये दोनों का सम भी तो 90 होना चाहिए. तो इसलिए इस x के अंदर अगर हमने ये थीटा ऐड किया तभी भी 90 मिल रहा है, और ये एंगल अगर ऐड किया तभी भी 90 मिल रहा है. मतलब जो हम एंगल ऐड कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए. दैट मीन्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी थीटा हियर इन दिस केस. ओके, एंड दिस थीटा मस्ट बी द क्रिटिकल एंगल. ओके, ये थीटा जो है वो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल होना जरूरी है, तब जाके ये इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा इस पॉइंट पे, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करके यहाँ पे पहुंचेगा, BC पे पहुंचेगा. The condition for this to happen is that this theta must be greater than the critical angle IC for the pair of this glass and water. Okay, तो अभी देखो यहाँ पे theta must be greater than IC. But what is IC here? How can we find out IC? IC can be found out by using the formula for critical angle. Sine of IC is always equal to the 1 upon the refractive index of denser medium with respect to rarer medium. ये हमारे पास formula है. But if we just try to find out the refractive index of denser medium with respect to the rarer medium, then we can just get that this will be actually refractive index of denser medium with respect to rarer medium happens to be refractive index of denser medium upon refractive index of rarer medium precisely. But here denser medium is going to be glass, whose refractive index is 1.5 given here. So you can just replace it by that here in the numerator, 1.5, and refractive index of the rarer medium, which is water here, whose refractive index is given to be 4/3. We can just replace it by that here. तो यहाँ पे 4/3 डाल देंगे. So refractive index of denser medium with respect to rarer medium कितना मिलेगा? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं आराम से. So we can just write this as 3/2, and that is to be multiplied with the reciprocal of this 4/3, which is going to be 3/4, right? So that we can just get this R mu D to be equal to 9/8, right? And if we just put this value of R mu D here, then we can get the sine IC, that is critical angle. Sine of critical angle will actually be equal to 1 upon 9/8, right? 9/8, and hence it becomes sine IC must be actually equal to 8/9. correct है? Yes. But then अगर ये IC equal to sin IC अगर 8/9 है, तो ये condition जो है हमारा sin theta must be greater than IC. If we just take sin on both sides, then we can just take that here, that is sin theta must be greater than sin IC. So sin theta must be greater than sin IC, and sin IC is already 8/9 here. So if you just replace it by that, then we can get that sin theta must be actually greater than 8/9. Okay, which is already there in this option A. That is should be the correct option. Okay, sin theta must be greater than or equal to 8/9. This is the condition after which this AB will be totally reflected. तो ये जो रे है उसको टोटली रिफ्लेक्ट होने के लिए ये कंडीशन होगा कि साइन ऑफ दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस और द साइन ऑफ दैट एंगल मेड बाय दिस प्रिज्म और ऑफ दिस प्रिज्म का जो एंगल है थीटा, उस एंगल का साइन 8/9 से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके ये पॉसिबल होगा. ओके, चलो ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर टुडे. सो वी हैव
just seen a large number of questions or MCQs on this chapter, ray optics. We'll see some more MCQs in the next lecture, okay, which will be based on lenses and mirrors, and also the concept of microscope, simple microscope and my telescope and compound microscope also. तो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. आज के लेक्चर में जो हमने क्वेश्चंस देखे थे वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और बिल्कुल बेसिक बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड थे, जो कि रिफ्लेक्शन के ऊपर और रिफ्रैक्शन के ऊपर ही बेस्ड थे. स्नेल्स लॉ वगैरह यूज करना था उसके अंदर, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द मोस्ट. बट नेक्स्ट इसमें जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे they will be based on simple microscope, compound microscope, and the concept of dispersion also, and also the prism के ऊपर भी questions रहेंगे and lenses के ऊपर भी. चलो ठीक है. So that's all for this lecture. Let us stop this lecture at this time. Thank you all of you.